the diagram for the condition of Terzaghi analysis equation. You can just make this diagram as I am explaining it. You can just draw this. So this is the complete analysis. We have the footing on the top, the load of QU, which is the load that is carried by the footing is QU, which is in the downward direction, is applied. This is the ground level. This is the footing. Here is the value of gamma. We will calculate in kilonewton per meter square. This is the total depth of the footing from ground level to the base of the footing, which is denoted by dF. So the total load which is applied on the footing is given by gamma, that is the unit weight into dF. This is the active zone number one, zone number one. Zone number three is known as the passive zone, and zone number two is the radial shear zone. So we have three zones. This will be denoted by A and B, the two corners of the footing. Okay, this is the G and E, the two corners of the zone failure zones. We know that we have the angle that is 45 minus 5 by 2 and 45 minus 5 by 2, and the internal angle will become 45 plus 5 by 2. This internal angle here, which is not written over there. So this is the pressure which is applied, the PP in the upward direction. The angle to the normal to it is denoted by phi. This is the base of the width of the footing, which is capital B. So this is the diagram for the Terzaghi's bearing capacity equation. So based on the assumption, as we have seen, the above condition is plotted. The load of the footing is QU. The ground condition is horizontal. Gamma is the unit weight of soil sample. The overburden pressure is given by gamma into dF, which is the depth of the footing, which is denoted by P, and this gamma dF. So this is the formulation we have seen in the previous diagram as well. So we have three zones. As number one is the active zone. The soil is in limit equilibrium state. That is the second zone is the radial or shear zone, and the third zone is the passive zone. So due to this overburden pressure, there is inducting passive zone, and due to the pressure of active and passive zone, there is a change in inducing radial shear zone. So what happens when the pressure applied or the load is applied on the soil? So generally the failure mode occurs. Okay, so the radial shear zone has a chance to get induced because from both the side, as the failure zone, but the passive zone is the failure zone where bulging can occur. So from there also pressure is being coming, and one pressure is also coming from the active zone. So due to that, there is there is a chance of inducing a shear zone, that is zone number two. So we have angle A, which is equals to phi. Angle B is again equals to phi. These both are angle equal. So due to the condition of limit equilibrium, as we have seen that the active zone is in limit equilibrium condition. So the soil sample, we can say angle CAB. You can refer the diagram. Just put the diagram on your one side, which we have drawn this diagram, and from there I'm writing the notations. I'm telling you the notations, so mention all those notation carefully. Angle CAB is equals to angle CBA. Okay, because as we have seen that both the angles belongs to 5 degree, that is phi. So we have the condition of limit equilibrium. From there we can write that angle CAB is equals to angle CBA. Also we have QU is the vertical and symmetrical due to the pressure presence of QU, that is the passive pressure. PP acting upward direction with the angle phi. As I have told you कि जो PP act कर रहा है, that will be the opposing force. क्योंकि QU downward direction में है तो PP upward direction में उसको opposing force जो है वो act करेगा. With the angle phi, because the angle is normal tangential to that, so वो angle phi जो है वो act करेगा. And C is the cohesion of the soil sample
acting in inclined way. तो C जो है that is the cohesion of your soil which is acting in the inclined way. Okay, so this is all the notations और all the diagrams जो कि हमारे फॉर्मूले में काम आएंगे. सो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वेट ऑफ वेज. सबसे पहले हम वेज का वेट निकालेंगे, मतलब हम जोन नंबर 1 में जो हमारा सॉइल है उसका वेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो वी हैव द टोटल वेट दैट इज बी. दिस विल बिकम ए बी सी. द सेंटर को जब इससे बाइफरकेट करेंगे तो इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट दैट इज B2 बाय B2. दोनों के एंगल फाई हैं. ये जो हाइट है इसके बेस से लेके सी तक वाली दैट इज डिनोटेड बाय एक्स. So the angle at A and B are equal because soil behaves as a limit equilibrium. So we have the weight of the wedge हमको ABC निकालना है. So for that we can write that tan phi is equals to, we know that tan phi tan theta की value क्या होती है opposite upon में adjacent. So we have B by 2 into tan phi, B by 2 into x. This B by 2 into x. This b by 2 into this x. अपोजिट यही होता है tan phi, है ना. So we will calculate the value of x from this particular condition and it will become b by 2 into tan phi. Now again we have the value of gamma which is the unit weight of soil. Unit weight of soil का formula होता है weight of soil upon में volume of soil. So weight of soil is W, volume of soil is V. So यहाँ से हम W की value निकालेंगे gamma into V. Again we have the values of different components. So W will become gamma into 2 into 1 by 2 that is V की value जो हम volume को change करेंगे तो 2 into 1 by 2 B by 2 into B by 2 into tan phi. तो ये जो हमारा वॉल्यूम है इसका फॉर्मुलेशन यहाँ पर इलेबरेट हुआ. तो ये इसको चेंज करने के बाद में ये हमको मिल गई वैल्यू 1/4 गामा इंटू बी स्क्वायर टेन पाई. यहाँ से W की वैल्यू हो जाएगी गामा इंटू 2 टाइम्स एज दो ट्राइंगल्स है इसलिए उसको 2 टाइम कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया. तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/2 B इंटू एच. ओके, 2 टाइम ऑफ गामा इंटू 1/2 इंटू बी इंटू एच. अब ये तो हमारा निकल गया था पहला फोर्स जो कि हमारा सॉइल के वेट के कारण हमने कैलकुलेट किया. अब हमारा निकलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में विच इज इक्वल्स टू अपवर्ड डायरेक्शन. सो वी हैव फॉर्मूला क्यू यू डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए इंटू बी इंटू 1/4 गामा इंटू बी स्क्वायर. ये गामा इंटू बी स्क्वायर जो वेट ऑफ दी सॉइल है वो एज इट इज आ गया इंटू बी इंटू क्यू यू क्योंकि ये क्या लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. सो इसको हमने इलेबरेट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई पी पी. क्यों? क्योंकि वो इक्वल और ऑपोजिट फोर्स है. अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स की बात करें ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का कैलकुलेशन हो गया. उसके बाद में हम अपवर्ड डायरेक्शन के कैलकुलेशन की बात करेंगे. दिस इज फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन कैलकुलेशन, दिस इज फॉर द अपवर्ड डायरेक्शन. डायग्राम को साइड में रखो तो ही मेरी बातें समझ में आएंगी. 2 PP राइट एंड लेफ्ट फ्रॉम बोथ द साइड, इसलिए एक साइड का एक वो करा हमने, ये है ना. यहाँ का एक PP कैलकुलेट हुआ, यहाँ का एक दूसरा चालू कैलकुलेट हुआ. +2C L sin phi, sorry Li sin phi which is the cohesion acting in the inclined direction. ये यहाँ पर जो cohesion act करेगा ये this C. ओके, सो इसको फिर हमने वो किया तो Li इज इक्वल्स टू CB प्लस B/2 अपॉन में cos CB which is equals to B/2 upon में cos phi, where CB surface apply the, where we have to apply the cos rule and substitute the value in equation 1. इस इक्वेशन में Li की वैल्यू जो है हमने सब्स्टिट्यूट कर दी. सो वी विल गेट द इक्वेशन, मतलब ये वाली पूरी इक्वेशन दिस एंड दिस इन दोनों कंबाइन करके क्यू यू प्लस बी प्लस 1/4 गामा बी स्क्वायर इंटू 10/5 विच इज इक्वल्स टू 2PP प्लस इसको रिप्लेस किया CB से तो ये 2C
2c b/2 में cos phi sin phi। ये यहाँ पर जो ये पूरी वैल्यू थी, ये वाली li sin थीटा वाली, इसको हमने क्या रिप्लेस कर दिया। ओके, सो वी हैव qu इंटू बी विच इज इक्वल्स टू qu इंटू बी रखा, बाकी पूरा इधर ट्रांसफर कर दिया, 2pp प्लस b इंटू सी टेन फाइव minus 1/4 gamma b square 10 phi. Now let us consider that pp components with respect to gamma and L are surcharged and surcharge load, that is Q. So we have, if we consider cohesion term, it means unit weight of soil and surcharge both will become ignorable quantity. यदि हम cohesion को लेंगे तो unit weight और surcharge दोनों ही जो है वो ignore करने के लिए हो जाएगी। यदि हम गामा की टर्म को कंसीडर करेंगे तो हमें surcharge और overburden pressure को कैलकुलेट करना रहेगा, which will become Qu is equals to gamma into D. So C will become ignorable quantity. C जो है वो हमारा cohesion force जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, cohesion of soil वो ignorable हो जाएगा। तो यहाँ से ये कंडीशन सब तरजागी की दी हुई हैं, वन बाय वन एनालिसिस करते हुए एजम्पशन के साथ में, उसके एजम्पशन को ही देखते हुए ये पूरा फॉर्मूला जो है वो डिराइव हुआ है। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने फाइनली इक्वेट किया तो ये बन गई क्यू यू इंटू बी प्लस पूरे में से 2 कॉमन निकाला तो पी गामा प्लस पी सी प्लस पी क्यू, टोटल में प्लस बी इंटू सी 10 फाइव माइनस 1/4 गामा बी स्क्वायर 10 फाइव। तो 2 ppc को हमने लिखा cnc, 2 ppq को हमने लिखा qnq और 2 pp गामा को लिखा हमने 1/2 b गामा ny। और इस इक्वेशन को हमने, वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में पुट अप किया, दोनों तरफ से b कॉमन निकाला तो वी विल गेट द फाइनल इक्वेशन which is qu is equals to cnc plus qnq प्लस 1/2 b गामा n गामा या फिर n r। ओके, सो दिस इज द फाइनल जो स्ट्रिप फुटिंग के लिए इक्वेशन दी गई है, वो ही सबसे कॉमन इक्वेशन एज आई हैव टोल्ड यू यूज की जाती है, वो ही यहाँ पर डिराइव हुई है, फिर फुटिंग की कंडीशन के साथ में वो मॉडिफाइड हो गई है। So this is the Tarzagi's bearing capacity analysis, and this is theorem for Tarzagi bearing capacity analysis. We will see some kind of numericals in the next chapter. Thank you.